my dear CAT aspirants, this is your mentor Seema Jhalani. Welcome you back to this platform. Already we have discussed past year questions of CAT 2024 slot 1 and the entire series is available in 6 parts. You must definitely watch those videos. And in today's session, we are going to discuss 3 questions of verbal and those are on para completion. So let's get started and together we will make it happen. Now, another quote, let's dive into it. A quote by Margaret Thatcher. But it should be in capital. Okay, so it is my bad. Okay, so you may have to fight a battle more than once to win it. So basically, what the author is trying to tell us over here. ये basically बोल रहा है that there are 2 things. One is means and second is ends. Okay, so why do you worry about the end? हम ये सोचते हैं कि कैट होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा. Why do you worry about the end? You should always worry about the means. Means here I mean to say action. So just keep putting in your hard work, be consistent in your performance and learn from the mistakes. तो आपको worry करना चाहिए कि हम क्या actions put कर रहे हैं rather than कैट के दिन हमारा क्या होगा. Okay, so just start working hard and keep practicing. ओके सो बेटा अब एग्जाम्स हमारे पास में आ ही रहे हैं एंड एवरी डे इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ यू आर कमिटिंग एनी मिस्टेक, इफ यू आर फॉलिंग समवेयर, इफ यू आर फीलिंग होपलेस, दैट्स क्वाइट नॉर्मल. मुझे लगता है सब चीज नॉर्मल है, ऐसा तो होता ही है एंड दिस इज गोइंग टू हैपन टिल द डूम्सडे, क्योंकि जब तक हमारा कैट नहीं आता है कुछ ना कुछ चीजें रहती है. बट आई विल ऑलवेज से यू दैट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, कीप एनालाइजिंग योरसेल्फ where you are faltering and what are the things that can motivate you back to your performance. Okay, so let's get started now with the para completion question. First question says science has officially crowned us superior to our early rising brethren. अब थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया होगा कि para completion basically is a kind of sentence insertion question. तो आप देख सकते हैं that this sentence is basically the eliminated sentence. Eliminated sentence means this sentence is the part of the paragraph and 4 blanks are given over here. This is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो आपको ये देखना है कि जो ये सेंटेंस है इन 4 ब्लैंक्स में से वो किस ब्लैंक में लॉजिकली फिट होने वाला है, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग सच पैराग्राफ्स यू हैव टू फाइंड आउट द टोन ऑफ द पैराग्राफ. टोन को फाइंड आउट कीजिए एंड मेंटेन द लॉजिकल कंसिस्टेंसी and also check out the flow of the paragraph. पैराग्राफ का फ्लो क्या है, उसका टोन क्या है और हमें उस सेंटेंस को कहाँ फिट करना है, राइट? अब यहाँ पर एक और चीज है that normally students they tell me that ma'am grammar is not there in CAT, grammar directly नहीं पूछी जाती है. Yes, you are right, but you cannot give a complete go by to grammar as well, क्योंकि ग्रामर भी वहां पर उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक सेंटेंस इंसर्शन और पैरा जंबल्स और पैरा समरी, तो वहां पर थोड़ी बहुत ग्रामर हमें डेफिनेटली हेल्प करती है. तो यहाँ पर भी हम थोड़ा ग्रामर पार्ट देखेंगे और देखते हैं किस तरह से ग्रामर हमें यहाँ पर हेल्प करेगा या फिर नहीं करेगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. द एलिमिनेटेड सेंटेंस इज साइंस हैज ऑफिशियली क्राउन्ड अस सुपीरियर टू आवर अर्ली राइजिंग ब्रेथरन. अर्ली राइजिंग का मतलब यहाँ पर है दोज पीपल हु आर दी अर्ली राइजर्स, जो जल्दी उठते हैं. एंड ब्रेथरन बेसिकली स्टैंड्स फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल. सो दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर दी अर्ली राइजर्स, जो जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, राइट? अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं, जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं. तो बेसिकली ऑथर इन दिस सेंटेंस ही इज टॉकिंग अबाउट दी अर्ली राइजर्स. और अब उन्होंने बोला है कि साइंस हैज ऑफिशियली क्राउन्ड अस सुपीरियर. तो यहाँ पर अस किसके लिए आ सकता है? मे बी कंपैरिजन पॉइंट इज देयर. तो हम यहाँ पे इतना देख सकते हैं that if the author is comparing us means something to early risers, इसका मतलब यहाँ पर हम ये बात करते हैं शायद it must be late risers. So let us check it out. अब आप मुझे बताइए कि आप लेट राइजर्स में आते हैं या अर्ली राइजर्स में आते हैं? मैं तो लेट राइजर्स में आती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज लव टू स्टे लेट एट नाइट. और मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई तभी होती, जल्दी उठ के कोई मुझे बोले कि जल्दी उठ जाओ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो नो, आई फील वेरी ड्राउजी, वेरी स्लीपी. तो यस, आई एम अ लेट राइजर पर्सन. ओके, सो नाउ द पैराग्राफ सेज
My fellow night owls grab a strong cup of coffee and gather around. I have great news. Okay. तो नाइट आउल्स बेसिकली किसके लिए आ रहा है? दोज पीपल जो रात को देर तक जगते हैं, मेरी पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाटएवर. ओके. एंड देन दे टेक अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी. आई हैव ग्रेट न्यूज. सो यहाँ पर ऑथर ये बोल रहा है कि अब उसके पास एक बहुत ग्रेट न्यूज है. अब वो क्या हो सकता है? लेट्स सी. फॉर अ लॉन्ग टाइम आवर काइंड हैज बीन unfairly maligned, stereotyped as lazy and undisciplined, told we ought to be morning larks, advised to go to bed early so we can wake before 5 a.m. and run a marathon before breakfast like all high flyers seem to do now. So beta, whenever the word now is given, so maybe the author is talking about today, present time. Okay. तो इसके पहले वाले सेंटेंस में ऑथर ये बोल रहा है कि दोज पीपल हु प्रिफर स्टेइंग लेट एट नाइट. तो नॉर्मली यहाँ पर ऑथर बोल रहा है कि ऐसे लोगों को बोला गया है दैट दीज आर दी पीपल हु आर टाइपकास्टेड एज लेजी एंड अनडिसिप्लिन्ड. बोलते हैं कि ये लोग लेजी होते हैं, अनडिसिप्लिन्ड होते हैं. उनको बोला जाता है दैट यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दैट टू बिफोर 5 AM. आपको बाहर घूमने जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके. Now, however, is a transition word. So whenever transition word is there, I told you earlier also, this suggests the change of tone. Okay. However, we are having the last laugh. बेटा last laugh का मतलब होता है now suppose you are proven right. Okay. After being criticized or what to say एडमोनिश. तो पहले आपको एडमोनिश किया जाता था बट नाउ अब लोग ये बोल रहे कि नहीं नहीं यू आर राइट. तो हु आर राइट? द पीपल हु वर दी लेट राइजर्स, या जो लोग लेट जगते रहते हैं रादर देन द पीपल हु आर दी अर्ली राइजर्स. तो वो लोग गलत नहीं थे. ओके. हमने उनको क्रिटिसाइज कैसे किया? दैट दे वर लेजी, दे वर अनडिसिप्लिन्ड. तो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके. सो नाउ वी आर हैविंग द लास्ट लाफ. इट मे बी अ टैड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट. अब इट यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? तो ऑब्वियसली इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इट हमको किसी ना किसी चीज के लिए बोल रहा है कि बेसिकली वो इट का यूज किसके लिए कर रहा है. एंड व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड? द मीनिंग ऑफ टैड इज व्हाट लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. वो कॉम्प्लिकेटेड क्या है? अ स्टडी पब्लिश्ड लास्ट वीक व्हिच यू मे हैव ऑलरेडी सीन व्हाइल स्क्रॉलिंग एट 1 AM suggests that staying up late could be good for brain power. It means यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहा है कि अगर आप देर रात तक जागते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है दैट उसमें कुछ हार्मफुल है या समथिंग रॉन्ग इज देयर. इन अ वे वो अच्छी बात है किसके लिए? ब्रेन पावर के लिए, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए वो अच्छा भी रहता है. Is this study a thinly veiled PR exercise conducted by a caffeine pill company? तो basically here the author is raising a question और वो इस चीज को डाउट कर रहा है कि समथिंग मिस्टीरियस थिंग इज देयर, डाउटफुल थिंग है कि क्या वाकई में ऐसा होता है. ओके. तो ऑथर इज रेजिंग अ क्वेश्चन ओवर हियर. नो, इट्स लेजिट. लेजिट मतलब लेजिटिमेट है, ये बिल्कुल राइट है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम डाउट करें. रिसर्च लेड बाय academics at Imperial College London studied data on more than 26,000 people and found that self-declared night owls generally tend to have higher cognitive scores. So basically इस line में we are talking about some study, we are talking about some findings on the basis of that study. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. तो author is basically talking about the people who prefer staying up late at night. Okay. एंड अगर वो देर रात तक जगते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी डेवलप होती है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेसिकली वहां पर हमेशा उसके डिसएडवांटेजेस ही होते हैं. नाउ आई हैव टू फिट दिस सेंटेंस इनटू वन ऑफ दीज ब्लैंक्स. अब हम बात करते हैं, दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिव बिकॉज द लेट राइजर्स आर क्राउंड सुपीरियर टू द अर्ली राइजिंग ब्रेथरन. राइट. अब यहाँ पर आ रहा है us late risers, and as you can see here it is coming which is a demonstrative pronoun. तो अब क्या आप इसको ब्लैंक वन में रख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू कीप इट इन ब्लैंक वन इट इज डिस्टर्ब द फ्लो, बिकॉज इन द नेक्स्ट टू लाइन्स ऑथर इज ओनली टॉकिंग अबाउट द और मे बी क्रिटिसाइजिंग द लेट राइजर्स. तो क्रिटिसाइज करने के बाद उसने बोला नाउ वी आर हैविंग द लास्ट लाफ. इसका मतलब अब लोग हमको क्रिटिसाइज करते थे, अब वो नहीं करेंगे क्योंकि हम भी राइट है. राइट.
So I think it should come in blank too, but हम बाकी को भी consider कर लेते हैं. Now, when you are saying over here that a study published, and is this study, so obviously this stands for this study only. So if I keep this sentence in blank 3, again it is going to disturb the flow of the paragraph. I cannot keep it in blank 3. So now option 3 is eliminated. Okay, option 1 is eliminated. Now option 4 and option 2, option 2 it sounds actually plausible, अच्छा लग रहा है. अब देख लेते हैं कि फोर्थ में आएगा कि नहीं आएगा. अब क्योंकि वहां पर ऑथर ये बोल रहा है कि रिसर्च बहुत हुआ है, रिसर्च 26,000 पीपल पर हुआ है, और डेफिनेटली ये प्रूव हो चुका है दैट नाइट आउल्स जो होते हैं, जो लेट नाइट पीपल होते हैं, जो बहुत रात को जगते हैं, तो नॉर्मली उनके हायर कॉग्निटिव स्कोर्स होते हैं. So I cannot keep this sentence in option in blank 4. Therefore, answer is going to be 2. Clear? I hope things are clear. It was very easy. It was very interesting. Let us move on to the next one. Now, the eliminated sentence over here is the Europeans did not invent globalization. Okay. इसका मतलब globalization पहले ही था और Europeans ने इसको invent नहीं किया था. Now, the first phase of globalization occurred long before the introduction of either steam or electric power. Modern technological development हुए थे, उससे पहले ही globalization था. Chinese consumers at all social levels consume vast quantities of spices, fragrant foods, unusual plants. Okay. The peoples of Southeast Asia who lived in forests gave up their traditional livelihoods. तो उन्होंने जिस पर वो उनकी livelihood था, जिस पर वो डिपेंड करते थे, अब उन्होंने उसको गिव अप कर दिया है. एंड मे बी दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्लोबलाइजेशन, कंप्लीटली रीओरिएंटेड द इकोनॉमीज टू सप्लाई चाइनीज कंज्यूमर्स. तो बेसिकली वो चाइनीज कंज्यूमर्स को कुछ ना कुछ सप्लाई करने लग गए थे, तो मे बी दे वर मूविंग फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर टेरिटरी. तो ये यहाँ पर हमको बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था. These exchanges of the year 1000 opened some of the routes through which goods and peoples continued to travel after Columbus traversed the mid-Atlantic. अब बेसिकली यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ईयर 1000 की, जहाँ पर ऑब्वियसली दिस ईयर ओपन सम ऑफ द रूट्स, but actually people started using and built upon those routes after Columbus he traveled across the Atlantic. Okay. Yet, the world of 1000 differ from that of 1492 in important ways. The travelers who encountered one another in the year 1000 were much closer technologically. They changed and augmented what was already there since 1000. If globalization had not yet begun, Europeans would not have been able to penetrate the markets in so many places as quickly as they did after 1492. अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूरोपियंस की. ओके, नाउ लेट अस चेक आउट दी ब्लैंक्स. ये हमारा ब्लैंक 1 है. सो दीज एक्सचेंजेस, सो आई कैन नॉट कीप दिस सेंटेंस इन ब्लैंक 1 बिकॉज द सेंटेंस आफ्टर ब्लैंक 1 इज सेइंग दीज एक्सचेंजेस. तो क्या हम इस सेंटेंस में एक्सचेंज शो कर रहे हैं? नहीं, एक्सचेंजेस हम कहाँ शो कर रहे हैं? इन दी प्रीसीडिंग सेंटेंस. So again, if I keep this sentence in blank 1, it is not going to make any sense, and again, it is not going to be coherent also and meaningful also, right? So this cannot come in blank 1, so this is eliminated. यहाँ पर हमने बात ही करा था कि ईयर जो 1000 था वहां पर उसने ओपन किया, बहुत सारे पास वगैरह रूट्स बनाए और लोग उनको यूज करने लगे जब कोलंबस ने क्रॉस कर लिया अटलांटिक को, राइट? Yet, now again this is a transition word, and in this sentence author is talking about two different time periods, that is 1000 and 1492. So again, if I keep this sentence over here, it is not going to make any sense. And then one more thing is there, that when I'm coming down to this paragraph, I can see they. Now they basically stands for whom? Does they stand for travelers? Of course not, because here we are talking about they change and augmented. That was already there. So what was already there? Globalization was already there. So Europeans did not invent globalization. Globalization was already there. So maybe the Europeans, they changed and augmented what was already there. So in this blank, I need something, okay, for which we are using they, and they here is being used not for the travelers, but for the Europeans.
So this will come in blank 3. So blank 3 can be my answer, but then obviously 2 we eliminated because it will not make any sense. Transition word is there. Can it come in fourth one? Obviously not, because they then, if I keep this sentence in blank 4, then obviously it is going to disturb this thing also, that am I using they for the travelers? Of course not. Okay, so answer is going to be what? Answer is going to be 3. इजी, वाज इट इजी? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामर हमें कैसे हेल्प कर रही है. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज देयर, ट्रांजिशन वर्ड इज देयर, ऑब्वियसली चेंज ऑफ टोन इज देयर, लॉजिकल फ्लो इज देयर. तो आपको इन सब चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पैरा कॉम्प्लीशन. नाउ दिस वाज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग. आपको बड़ा मजा आने वाला है इस पैराग्राफ को पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो द एलिमिनेटेड सेंटेंस इज येट each day. Can you see? Yet is given, transition word. Yet each day the flock produce eggs with calcareous shells, though they apparently had not ingested any calcium from land which was entirely lacking in limestone. Paragraph. Early in this century, a young British schoolboy who, preparing himself for a scientific career, began to notice a strange fact about hens in his father's poultry yard. As they scratched, mind it, they again is a personal pronoun. They is a pronoun. It means I need to have certain noun before they. But they stands for which noun? We will check it out later. As they scratched the soil, they constantly seemed to be pecking at specks of mica, a siliceous material dotting the ground. No one could explain to Louis Cavern why the chickens selected the mica, or why each time a bird was killed for the family cooking pot, no trace of the mica could be found in its gizzard. Gizzard is basically beta the part of digestive system. Okay, it took Cavern many years to establish that the chickens were transmuting one element into another. They is given, yet is given, okay, and the concluding statement, the concluding statement, blank is also given, so it might be a concluding statement, but then we have to see then blank 3. Okay, अब यहाँ पर उसने बोला है yet each day. So let me explain you the first line. कोई पर्सन था ब्रिटेन, और वो कुछ ना कुछ नोटिस करना चाह रहा था अबाउट हिज फादर्स पोल्ट्री यार्ड. उसने कुछ नोटिस किया. एज दे स्क्रैच्ड, बेटा दे किसके लिए आ रहा होगा? दे डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा होगा हेंस के लिए. ओके, एंड आई कैन नॉट कीप दिस सेंटेंस इज ब्लैंक 1, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रांजिशन वर्ड है तो ये इसको जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिशन वर्ड के लिए हमें देखना होता है कि इफ दिस सेंटेंस इज सेइंग समथिंग, सो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में कुछ सेंटेंस ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? तो ये सेंटेंस इसके अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है फ्लॉक प्रोड्यूस एग्स विद कैल्शियस शेल्स दो दे एपरेंटली हैड नॉट इंजेस्टेड. तो उन्होंने कोई कैल्शियम तो उन्होंने इंटेक नहीं किया है, बट फिर भी वो एक्सेस ऐसे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन करते हैं. तो ऐसा कुछ है कि उन्होंने कुछ और इंटेक किया था और कुछ और से रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसा उसने फर्स्ट सेंटेंस में नहीं बोला है. सो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 कैन नॉट बी द आंसर. क्लियर? एंड दे हियर स्टैंड्स फॉर हेंस. अब हेंस क्या करते हैं? एज दे स्क्रैच द सॉइल दे कॉन्स्टेंटली सीम टू बी पेकिंग एट स्पेक्स ऑफ माइका. तो बेसिकली वो क्या करते थे? दे ट्राई टू डिग द ग्राउंड, ओके, विद देयर बीक्स, और वहां से वो क्या लेते थे, किसका इंजेस्ट करते थे, किसका इंटेक करते थे? माइका का, राइट? और माइका बेसिकली क्या है? इट इज अ सिलिकॉन मिनरल. No one could explain to Louis Carverin why the chickens selected the mica. Ab now you see, here they were digging the ground in order to take what? Mica. But again, nobody could explain that why the chickens were selecting the mica. So again, these two sentences are going together. Okay, तो अभी तक तो यहाँ पर माइका ही सिलेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर जाकर क्या हो गया कि when they producing the eggshells that was containing calcium carbonate. तो अगर आप माइका को कंज्यूम कर रहे हो तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे वहां पर आ सकता है? ओके, तो these sentences will go together. So obviously this sentence cannot come in blank 2. So again 4 is eliminated. Okay,
तो जब वो वहां पर लाइक फैमिली कुछ कुक करती थी तो वो देखते थे कि देयर वाज नो ट्रेस ऑफ माइका ओके इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ चिकन्स और हेंस। तो जब वो माइका इंटेक कर रहे हैं तो देयर शुड बी माइका इन देयर बॉडी, बट माइका वहां पर था ही नहीं, तो वहां पर क्या था, कैल्शियम था। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया दैट यू आर ईटिंग समथिंग एंड देन अदर थिंग इज देयर इन योर बॉडी ओके। सो अब यहाँ पर देखते हैं हम सेंटेंस ब्लैंक 3। इट टुक कैरवन मेनी इयर्स टू एस्टैब्लिश दैट। अब क्योंकि यहाँ पर वो माइका का इंटेक कर रहे थे, देन ऑल ऑफ अ सडन द ऑथर इज सेइंग येट ईच डे द फ्लॉक प्रोड्यूस एग्स विद कैल्सियस शेल्स। तो यहाँ पर एगशेल को प्रोड्यूस करते थे जिसमें क्या कंटेंट होता था, कैल्शियम कार्बोनेट, though they apparently had not ingested any calcium from land which was entirely lacking in limestone। तो जो soil था उसमें obviously limestone was missing and limestone is basically what is your calcium rich mineral। तो जब उन्होंने कैल्शियम का इंटेक ही नहीं किया तो हाउ वाज इट पॉसिबल कि जब वो एक्शन को प्रोड्यूस कर रहे थे तो दैट वाज कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेसिकली ऑथर को थोड़ा सा यहाँ पे सब चीजें मिस्टीरियस लग रही है ओके। सो यस आई कैन से that this sentence will come in blank 3 okay because it's a transition word, and on the basis of this thing it took caravan many years to establish that the chickens were transmuting one element into another। So when this mysterious thing was there, so normally it took several years for caravan to understand this thing that basically maybe the chickens were transferring one element into another। अब वो one element क्या हो सकता था, mica okay containing silicon, and it was transferring into another, and another was what, calcium। Got it? So yes, the correct answer is going to be 3। and if I keep this sentence in a blank 4 it will not make any sense because again yet is given and yet says mica intake of mica, but basically mica was not there in the body, what was found, calcium was found। So this will come in blank 3। So correct answer is 3 and option 4 is eliminated। Okay, so all the 3 para completion questions, rather I should say sentence insertion questions, they all were doable। I won't say कि बहुत easy थे, but yes they were moderate। So if you have a good if you have good command over reading, okay, if you keep reading on a daily basis तो आपको इस तरह के questions को solve करने में कभी problem नहीं आएगा। And yet again I would say do not give a complete go by to grammar। grammar बहुत hard को नहीं पूछी जाती है, but small things are there that can definitely help you to crack such kind of questions okay। तो यहाँ पर आपको transition words देखना है, logical flow देखना है, उसकी smoothness देखनी है, and I'm pretty sure कि if you keep practicing this way you will be able to solve such kind of questions। और exam में याद रखिएगा कि keep practicing such kind of questions every now and then, and you have to give not more than 1.5 minutes to one question। तो 8 questions होते हैं, 8 questions मतलब 1.5 minutes to each question okay, at the max 2 minutes but not more than that, but that thing will come only with the practice। So keep practicing, keep learning okay with us, and if you have any doubt you can always visit our site and give us a call on this number। we are always there by your side। So keep learning, thank you so much। I will come up with another video very soon।